Hello everyone, Master Bobby. Welcome back to my channel. I'm telling my friends, English is super easy, super easy. Very simple my dear. You have to do one thing. कोई भी फ्रेज ले लीजिए, उसका डिफरेंट वेज आप लर्न कीजिए. डिफरेंट वेज कोई भी फ्रेज का आपको अलग अलग तरीके से बोलना पड़ेगा. अगर उसको रिपीट नहीं करना है, डोंट रिपीट दैट माय डियर. फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज ले लीजिए, यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. अगर वही फ्रेज को बार बार रिपीट करेंगे, इफ समवन थैंक्स यू, राइट, समवन सेज थैंक यू, राइट, you are responding, your traditional response is there, your traditional answer is there, you are welcome. बोरिंग नहीं लग रहा है? If you really want to speak like a native speaker, आपको different ways आपको सीखना ही पड़ेगा my dear. I will tell you some different ways to say you are welcome, right? You can say no problem, you can say no problem, you can say not a problem, you can say anytime. अगर फ्यूचर में आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, सिंपल आप बोल सकते हैं anytime. You can say don't worry about it, don't worry about it. You can say it was nothing. You can say it's my pleasure. You can say the pleasure is mine. The pleasure is mine. You can say the pleasure is all mine. You can say don't mention it. You can say of course. You can say you bet. इस तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स. ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स नहीं, ट्रेडिशनल आंसर नहीं, अलग अलग फ्रेजेस आप बोल सकते हैं जो कि बहुत इजी हो जाएगा. यू कैन से प्लीज टू बी ऑफ असिस्टेंस. प्लीज टू बी ऑफ असिस्टेंस. आई एम श्योर यू वुड डू द सेम फॉर मी. आई एम श्योर you do the same for me. It was the least I could do. Simple you can say thank you. तो इस तरह आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं. No problem, not a problem, no problem, anytime, don't worry about it, no worries, it was nothing, don't mention it, of course, you bet. Please to be of assistance, please to be of assistance, the pleasure is mine. It's my pleasure. The pleasure is all mine. I'm sure you do the same for me. It was the least I could do. Thank you. इस तरह बहुत सारा फ्रेजेस आप बोल सकते हैं, राइट? अगर इस तरह से डिफरेंट वेज में आप बोलना शुरू करेंगे तो इंग्लिश विल बी इजी फॉर यू. बिलीव मी फ्रेंड्स, you can learn this way is the best way. If you really want to speak like a native speaker, and definitely it works. Try करके देखो. One thing, listen and speak. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. You have to practice my dear. If you really want to speak like a native speaker, you have to practice. Right? Speak. See you in the next video. Thanks for watching. Thank you.